Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। Congratulations and welcome. मंगल का आपको बधाई हो। Church, we're glad to have you here. हम खुश हैं आप हमारे साथ 9 हैं। years you suffered. 9 साल अलग अलग परेशानी से आप गुजरे। Tell us your story. आप हमें आपकी कहानी बताइए। My name is Mangalika and I'm from Sri Lanka. मैं मंगलिका से हूँ, श्रीलंका से हूँ। Pastor Roshan Wickramasinghe, Elizabeth Wickramasinghe. And my church from Sri Lanka, my pastors are Pastor Roshan Wickramasinghe and Pastor Elizabeth Wickramasinghe. मेरे चर्च के पास्टर विक्रम सिंह है। We want to really appreciate our pastors for giving us this और opportunity. हमारे पास्टर्स का हम धन्यवाद देते हैं हमें अवसर देने के लिए कि यहाँ पर आकर नाइजीरिया में आकर हम गवाही दे सके। රෝගයක් ඇති වුණා 2015 එක නෙක්පටි සින්ඩ්‍රම් කියලා වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරා. In 2015, I was diagnosed with nephrotic syndrome. ඊට කලින් ඉඳන් 2012 ඉඳන් මට තිබුණා नेफ्रोटिक सिंड्रोम का निदान हुआ था 2015 में। Before that, from 2012 onwards, I was 2012 से आगे I was having a burning sensation in my urinal area. और मूत्रों को पास करते समय दर्द होता था। වොෂ්රූම් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඇඟේම ඒ මුත්‍රා යනවා ඒක නිසාම ගොඩක් අපහසුවට ලැජ්ජාවට ලක් වුණා. So it caused so much discomfort. इससे मुझे बहुत परेशानी हुई My body because I didn't have time to go to the washroom. और वॉशरूम जाने के लिए कंट्रोल भी नहीं होता था। इसके वजह से मुझे लज्जा प्राप्त होती थी। බෙහෙත් ගත්තත් ටික කාලයකටයි ඒක සුවය ලැබුවේ. I met several doctors. मैं बहुत डॉक्टरों से मिली, Used to give me medication, but it didn't वो मुझे last. दवाई देते थे लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था Same symptoms over and और over again. वही चीज़ें बारंबार मेरे साथ घटती थी। තමයි වෛද්‍යවරු අනුමත කරේ මට නික්ප්‍රොටි සින්ඩ්‍රම් කියන රෝගය තියෙනවා කියලා. So after 3 years in 2015, 3 साल बाद 2015 में I was suffering with nephrotic syndrome. डॉक्टर्स को लगा, पता चला कि मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से परेशान हूँ। Heard of such sickness before. मैंने ऐसी बीमारी का कभी नाम नहीं सुना था වෙනවා කියලා වෛද්‍යවරු කිව්වා. It was a kidney disorder और किडनी का ये रोग था වැටුණා. and it really affected me mentally. और इसका प्रभाव मेरे मानसिक संतुलन पर भी पड़ा। දුර්වල වුණා ප්‍රෝටීන් පිට වෙන නිසා. This condition causes to pass excess protein through urine. और इस कंडीशन के द्वारा प्रोटीन मेरे शरीर से ज़्यादा जाता था मूत्र के द्वारा। ඒකම මට නොයෙකුත් රෝග ගණනාවක් ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් සුගර් මේ වගේ දේවල් මගේ ශරීරයට වැඩියෙන් ආවා. So I felt very weak in my body. मेरे शरीर में मुझे बहुत Due to कमजोरी this महसूस condition, होती थी। इस अवस्था my के pressure कारण levels went high, cholesterol मेरे levels went रक्तदाब high, का लेवल बहुत sugar ऊंचा हो levels गया। went high. मेरे शक्कर का लेवल जो लोह में था वो भी हाई हो गया। ගොඩක්ම මානසිකවත් මේ ආර්ථික අපහසුතාවයන් වලට ලක් වෙන්න වුණා මේවට බෙහෙත් කරන්න ගිහිල්ලා. Also, my body started swelling. और and मेरे शरीर पे also सूजन I आते had थे to spend so much money on और the मैंने बहुत medication. खर्चा किया दवाइयों पर It was mentally a very difficult और situation. मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था। සිංහල මං ගොඩක් කරේ වෛද්‍යවරු කිව්වා ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් කරද්දී ඒවා අතුරු ආබාධ එන නිසා අපි තීරණය කරා සිංහල බෙහෙත් කරන්න ඕනේ කියලා. The doctor said if I continue to take the medication, डॉक्टर it का will कहा आप cause दवाइयाँ लेते many रहोगे side effects. तो आपके then we बहुत साइड decided इफेक्ट हो जाएंगे। go for native treatment. फिर हमने නිසා අපිට स्थानिक ගොඩක් මුදල් වැය වෙන්න වුණා. ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। වෙන්න වුණා. ඒ බෙහෙත් තම්බන්න ඕනේ ඒවා පිටයි බොන්න අපහසුයි. නමුත් ඒ දේ කරන්න ඕනේ වෛද්‍යවරුන්ගේ කිව්වනේ අතුරු ආබාධ තියෙනවා කියලා ඒක නිසා ඒක කරා. So we went for native treatment and और हमने लोकल ट्रीटमेंट शुरू किया। places. अलग अलग जब हम यात्रा करते थे Of money and इसके बहुत पैसा हमें देना पड़ेगा और it's not an easy thing to do. समय भी बहुत ज़ाया हुआ और आसान नहीं था मेरे लिए। මම ගොඩක් අවුරුදු 9ක් තිස්සේ මේ රෝගය නිසා ගොඩක් දුක් විඳා මම ගොඩක් ධෛර්යමත්ව වැඩ කරන කෙනෙක් මට ඒ වැඩ කිසිවක් කරගන්න බැරි තරමට මම දුර්වල වුණා.
I was a very efficient person और before मैं I काम करने वाली started स्त्री हुआ my करती थी। disfillment. ये रोग होने से पहले Then I started becoming very, very weak. मैं बहुत कमज़ोर बन गई। ගොඩක් දුක් විඳා තනිවම අඬපු අවස්ථාවල් ගොඩක් තියෙනවා මන් නිසා ගෙදර ඉන්න අයටත් දුක් විඳින්න වුණා. There was many times that बहुत I बार used to मुझे cry लगा in my मैं room. रोती थी अपने घर Before में। that, I was a very strong person. उससे पहले So मैं I एक didn't मजबूत want स्त्री people हुआ to करती see that थी। I am weak. मैं नहीं चाहती कि लोग देखें कि मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई समाधान नहीं था, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। जब मैं इस अवस्था में सिस्टर आशीष जो श्रीलंका से है ऑनलाइन ज्वाइन हुई और उन्हें चंगाई धारा में ज्वाइन होकर उन्हें चंगाई को ग्रहण किया 2023 में। එයාට කියලා මටත් මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ නිසා මං ජීවත් වෙන්න ආස නිසා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ඕනේ නිසා මං එයාට මේ රෙජිස්ටර් වුණා. So I went and spoke to Sister Ashi and I said, मैंने आशीष से बात की, सिस्टर आशीष से जाकर मुझे इससे बाहर आना है, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मैं मजबूत रहना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। 2024 ජූලි මාසේ හීලින් සර්විස් එකේ පාස්ටර් ක්‍රිස් තුලින් මම ඒ ආඥාව ලැබුවා. So in 2024 2024 में जुलाई में मैंने आपको रजिस्टर किया चंगाई धारा के लिए और ऑनलाइन में जुड़ गई। පාස්ටර් ක්‍රිස් මගේ නම කියලා ආඥා කරනකොට ඊට කලින් ඉඳන් මම ගොඩක් සූදානම් වුණා. පාස්ටර් ක්‍රිස්ගේ දේශනාවල් ඇහුවා. ගොඩක් අය මාව ධෛර්යමත් කළා. වචනය තුලින් මාව ඉගැන්වුවා. මගේ ඇදහිල්ල ශක්තිමත් කරගන්න ගොඩක් අය මෙහින් උදව් කරා. So many others really supported me to build my faith. I बाकी लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। पास्टर क्रिस के मैं संदेश मुझे सुनाए और मैंने अपने विश्वास को मजबूत किया और मैं ऑनलाइन जुड़ गई पास्टर क्रिस के साथ। මට මගේ ශරීරයෙන් කකුල් දෙකෙන් රස්නයක් දැනුණා. On the day that Pastor जिस दिन पास्टर क्रिस परमेश्वर के सेवक ने मेरी सेवकाई की, I felt a burning sensation in under my feet and मेरे पैरों के नीचे और पूरे शरीर में मुझे एक जलन महसूस हुई। තුනේ පඩිපෙළ නගින්න බෑ. ගොඩක් අමාරුවෙන් හිටියේ. So earlier I couldn't even climb steps. वो पहले सीढ़ियों को चढ़ नहीं पाती थी, पैर में बहुत दर्द होता। मैं अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हूँ। සුවේ ලැබලා ඉන්නවා. Today I am totally set free and मैं I पूरी want तरह to से give मुक्त glory हो to चुकी हूँ और God. मैं परमेश्वर को Hallelujah. गौरव देना चाहती हूँ। That is you on the screen. वो आप है स्क्रीन पर। You on the screen, the man of God ministering to you. परमेश्वर के सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सर के बालों के लेकर पहले के तरह तक आप चंगे हो चुके हो, आप मुक्त हो चुके हो। यीशु के नाम में आपके लिए हो चुका है। Since you got healed till today, what are the changes? आप चंगे हो गई तो क्या बदलाव आपने देखे हैं? මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක්. I like to stress myself and do a lot of मैं work. बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ, I don't like to be lethargic. मुझे आराम से बैठना पसंद नहीं है। නැගිටලා මගේ වැඩ කරනවා. I wake up at 3 o'clock in the morning. मैं 3 बजे उठती हूँ, Day-to-day work. मैं अपने घर का काम करती हूँ। That I do. मेरा छोटा व्यवसाय है जो मैं करती हूँ। ශක්තිමත් ප්‍රීතියෙන් හැමදේම කරගන්නවා. I'm so joyful. I'm so, मैं बहुत so खुश strong हूँ, and मैं इतनी ताकतवर हूँ, मैं हर एक चीज़ अपने आप से कर सकती हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है। Congratulations. बहुत बहुत बधाई हो। Mangalika, you participated from home. मंगलिका अपने घर से शामिल हुई, Started online आप चंगे हो गई। in your house. आपके घर में आपने चंगाई को पाया, You got healed. आप चंगी हो गई। Talk to someone मैं किससे बात करना चाहता हूँ जो घर पे है, अभी to this program, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, listening and watching you, सुन रहे और देख रहे आपको, of miracle, जिन्हें चमत्कार की आवश्यकता है, and especially those from Sri Lanka. और विशेषता वो लोग जो श्रीलंका से, उनसे बात कीजिए। ඉන්න කෙනෙකුට ඕනෙම කෙනෙක් ඒ සුවය ලබා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසය තුළ ඔබ සුවය ලබන්න යනවා. our God is a miracle working हमारा God. परमेश्वर So चमत्कार as you करने वाला are परमेश्वर है। connected, maybe online जैसे or आप जुड़े हुए here, ऑनलाइन और आप यहाँ just, पर हो, do
do whatever the man of God परमेश्वर says. सेवक जो आपसे कहने के लिए कह रहे हैं उसे कीजिए, आराधना कर रहे हैं आराधना कीजिए। See the miracles that are going online, the ऑनलाइन जो testimonies, चमत्कार हो उसे आप देख सकते हो। encourage yourself and अपने आप को build up उत्तेजना दो, अपने and that विश्वास को will help you to और receive मजबूत your करो, और ये आपकी मदद करेगा अपने चमत्कार को ग्रहण करने के लिए। What would you like to say to the man of God, Pastor Chris? पास्टर क्रिस, परमेश्वर के सेवक से आप क्या कहना चाहोगे? ගොඩක් ආදරේ කියන්න කැමති පාස්ටර් ක්‍රිස්ගේ කැපවීම නිසා අද බොහෝ අයගේ ජීවිත සුවපත් වෙලා තියෙනවා, ඒ වගේම ධෛර්යමත් වෙලා තියෙනවා, ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. I want to say मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर के सेवक पास्टर क्रिस से, love you so much मैं आपसे प्रेम करती and through हूँ the dedication that you have done, जो you आपने have brought समर्पण healing करके to the कार्य nations, किया है और brought चंगाई लाई है राष्ट्रों तक, बहुत सारे लोगों तक। honor you, हम आपका सम्मान करना चाहता है जो आपने हमारे लिए और हमारे जीवन में किया है, और बहुत सारे लोग जो दुनिया भर में हैं। දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා මට වඩා දේ නුඹලා කරන්න යනවා කියලා. ඒ දේ පාස්ටර් ක්‍රිස් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙටම කරන නිසා ස්තුති කරනවා. Jesus said in the Bible, यीशु ने कहा बाइबल में, when he leaves and when the Holy Spirit comes, जब वो जाएंगे और पवित्र आत्मा आएगा आएंगे and that is तो आप बहुत बड़े कार्य करोगे मुझसे ज्यादा। और यही मैं पास्टर क्रिस के द्वारा मैं देख रही हूँ, यही कार्य परमेश्वर कर रहे हैं। सारा महिमा परमेश्वर को देते हैं। Glory, 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 glory. महिमा 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 महिमा। Malika, thank you so much. मंगले का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका आशीषित करे।